All right, let's see some examples. I'm gonna go with the same experiment जो हमारा E3 था मेरे ख्याल में, okay, which was that we roll. Any questions so far? Okay. Um, Alright, so you roll two dice और उसके बाद फिर हम इसकी जो sample space है उसके बारे में हमने लिखा था कि it's the pairs of the kind where A and B are between 1 and 6. So let's define a function which is which gives you a probability. Okay, so can someone define a function for me which is a probability function on this experiment? So remember, what does it mean to define a function? It means that इसकी जो input है, इसका जो domain function है, उसमें you have these pairs, right? You have 1 1, you have 1 2, you have I don't know 2 1, and so on. These are the pairs, and for each one of them, you have to map it to a real number. Okay, is it true? Yes, sir. सर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होना जरूरी है? Oh, what is probability? देखो इसीलिए मैं तुम्हें फिर बार बार कह रहा हूँ कि forget about the intuitive notion जो आपने लर्न किया है. ओके, जस्ट सो अभी मैंने आपसे ये पूछा कि सो इसकी जो इनपुट है वो ये पेयर्स है. ओके, सो 1 2 2 1 3 3 3 4 and so on. Okay, और इसकी जो आउटपुट है this is the infinite set of real numbers, right? So is it how a probability function looks like? Do you guys agree? I mean, I still need to make sure that ये वाली conditions valid है, right? But beyond beyond that, is it what a probability function looks like? I want to hear it. Open your mics. Yes, no. उबैद जगाओ यार इनको, नाम लो इनके. अब्दुल्ला निजामी, अब्दुल मुकद्दम, You started with an A. मोहम्मद उस्मान. It's roll number wise basically. Okay, okay. मोहम्मद उस्मान. Absent mark करते जाओ इनको. Okay. दानिश धीरज. Yes, sir. Okay, is this what a probability function looks like? Yes, no. Yes, sir. कौन है ये? दानिश है? Yes. Muhammad Usman. Mohammed Usman. Okay, okay. ठीक है. So anyone else? Where is the usual lot? Chavez कहाँ पे है? Ayman कहाँ पे? ईमान कहाँ पे है? अनस ने तो कह दिया है कि Chavez, this is how a probability functions looks like. सर मेरा ना बहुत ज्यादा लैग आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. मैं Okay, okay, okay. सॉरी. Okay, 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 okay. All right. Anyone? सर क्या हम पीछे जो कंडीशन दी हैं उसे दोबारा देख सकते हैं? Yeah, sure. Go ahead.
सर उसमें तो आपने वैल्यू तो दी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नहीं? जैसे 0 वाली कंडीशन है या 1 वाली। हाँ, ये मैंने नहीं बताया। ओके, ये मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन उसके अलावा कोई इतराज नहीं है ना आपको? नो सर, उसके अलावा कोई तरह। बट द थिंग इज, एक बहुत बड़ा इतराज आपको होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ गलत किया हुआ है। तो दैट्स सारे एलिमेंट्स नॉट, को नहीं किया गया? नहीं, दैट्स नॉट हाउ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन लुक्स लाइक। This is absolutely not how a probability function looks like. Let me make it slightly simpler. Okay, let's say कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो पहले वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें you toss 2 coins. Okay, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है उसमें you have head 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 tail tail head, and you have tail tail. Okay, and on this side you have numbers. So let me do this. Let me do जो कुछ आप लोग कह रहे थे, let me do this 1/2 कहीं पे लिख देता हूँ, 1/4 कर देता हूँ, और 1/4 कर देता हूँ, और 0 भी अवेलेबल कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स से कि हेड की जो प्रोबेबिलिटी इट्स 1/2, टेल हेड की जो प्रोबेबिलिटी इट्स 1/4, हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी ये भी 1/4 है, और टेल टेल की प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके, अब मैंने एरोस लगा दिए हैं। इज दिस अ वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन? अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक। I don't think so. व्हाई नॉट? So because probability should be equal for all of those. वो 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 देखो यार, तुम देखो, मेरे लिए जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होता है ना, आप लोगों को कुछ लोगों ने गलत बताया होता है और मैंने उसको समहाउ ब्रेक डाउन करना होता है। वो मेरे लिए मुश्किल वही होती है। मैं अभी पिछले 20 मिनट से वही कर रहा हूँ कि जो आपको बताया गया वो गलत है, प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ओके, बराबर ना बराबर होने की भी कोई बात नहीं हुई। ओके, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया है, उसकी इनपुट डिफाइन की है, उसकी आउटपुट डिफाइन की है, उसके ऊपर 3 रूल्स आपको मैंने बताए हैं। ओके, इट मस्ट बी एटलीस्ट 0, इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी मोर देन 1, और जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन रेस्पेक्ट करेगा वो। सो अब मुझे बताएं। Yes, sir. Then it is. The answer is no, it's not. Okay, it's not a Sir, why have you written 1/4 twice? Why can't we just point at it? yeah, we can do this, we can do this. That is a good point. So let's say कि 1/4 यहाँ पे एक दफा यहीं पे आया है। Okay, okay. So why is this still not a probability function? यार देखो, the problem is here, यहाँ पे प्रॉब्लम है। Remember मैंने आपको क्या कहा था कि probability function की input must be an event. Okay, so did I define it for every event here? For example, did I define it for empty set? No, sir. You I have left some. haven't. मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको sample space की outcome के लिए define किया है। Okay, I haven't defined it for the whole subsets. Okay, so for example, अगर आपके पास एक experiment है जिसमें, again making it more simple, toss a 1 coin. Okay, तो इसकी जो फंक्शन रूडेस्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ओके, वो होगा, यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेट, देन यू हैव अ हेड, you have a tail, you have a head and a tail. Okay, so these are 4 possible things that you can have in the event space. Okay, this is what event space looks like, and I need to define it for all of them. Okay, So it's not enough to define it for just head and tail. yes. सर ये 2 Okay, कॉइन्स के लिए बता रहे हैं आप?
सो एक कॉइन आपके पास, नहीं 1 coin है ना, तो ओके। तो ये सो जब आप we हेड प्रोटेक्ट have की to बात करते हैं दो even स्टेट्स का, define तो it इसका for क्या the मतलब होगा? events सॉरी, that couldn't occur. हेलो, Yes, sir. We have to define add the क्या क्वेश्चंस? सर ये जो हेड टेल आपने दोनों का सर्कल बनाया, इसका क्या मतलब होगा जब कोई ने एक है तो? देखो मैं तुम्हें फिर दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सैंपल स्पेस में आपके पास क्या है? यू हैव अ हेड एंड यू हैव अ टेल, राइट? ओके। अब सैंपल स्पेस के पावर सेट में क्या है? व्हाट इज इन द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस? You have an empty set, you have a head, you have a tail, and you have a head and a tail, right? ये है तुम्हारे पास इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस मैंने तुम्हें यही डिफाइन करके बताई है ना कि इवेंट्स come as a subset of S, right? Which means that events must be in the power set. Okay, so head and a tail इसके अंदर मुझे कामा भी लिखना चाहिए और parenthesis भी देने चाहिए, just to be more concise. But this is one event, one possible event. Okay, yes, sir. the other guy, पता नहीं वो उस्मान था मेरे ख्याल में, ये कौन है? Are we fine? जी सर। So don't confuse event space with the sample space. Okay, sample space contains all possible outcomes. Event space contains all the subsets of the sample space. Okay, event space is much bigger than the sample space. Okay, so for example, अगर event space में आपके पास दो elements हैं तो event sample space में दो elements हैं तो you would have four elements in the event space. If you have four things in the sample space, event space में कितनी चीजें होंगी? You would have 16 of them, right? 2 to the power 4. Okay, so there are exponentially more things in the event space compared to a sample space. Okay, so a function जिसको हम probability कह रहे हैं, it goes from the event space to the real space. Okay, rules की तो भाई बहुत बाद में बात आएगी, अभी हम उसकी जो definition है उसी को ही violate कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे. Okay, all right, so let's so let's define it for this. Okay, so हम मैं ये करता हूँ कि empty set के लिए let's make it 0, for tail let's make it 1, for head let's make it 0, for head and tail let's make it 1. Okay, is this a valid probability function now? नो Why not? सर, ये सारे की बन रही है, 2 बन रही है। 2 कैसे बन रही है? नहीं 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 सर, ठीक हो है ना? देखो हमने ये कहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, और सैंपल स्पेस क्या है? दिस इज योर सैंपल स्पेस एच टी. राइट सर, सॉरी सर। ओके, दिस इज योर सैंपल स्पेस और इसकी वैलिड है, इसकी 1 ही है. ओके, टेल की मैंने 1 रखी है, हेड की मैंने 1 रखी है. अब वो ये कह रहा था कि दो मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी should be less than or equal to probability of A plus probability of B. Okay, ये आपको चेक करना है कि ये वहाँ पे valid है नहीं. But if you look at it carefully, you'll see that this is actually valid. Okay, um, uh, that's perfect. So this is actually a probability function. Okay. सर यूनियन की कैसे देखेंगे हम? So pick any set. यहाँ पे कोई भी दो set pick कर लो. So for example, you can pick empty set and you can pick H. Okay, empty set और H का जो union है वो क्या होता है? वो H होता है, right? So H की जो probability है, it's
एच की प्रोबेबिलिटी प्लस एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी उससे कम या उसके इक्वल है. दिस इज वैलिड, राइट? Similarly, you have another set H and you have a set T. ओके, इन दोनों के यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है, सो इस H की प्रोबेबिलिटी 0 है और T की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 है. ओके, सो यू वांट के इनके यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1. वो तो इनका जो यूनियन है इट्स इक्वल टू H कमा T, राइट? सो ये इनका यूनियन है और इसकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी वो 1 है, तो विच इज फाइन, विच इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, जी सर. awesome. I'm gonna uh, I'm going to um, leave you guys with the experiment that you roll. जो original experiment है जिसके ऊपर हम started simplifying it. You roll 2 dice. Okay, I'm going to ask you to define sample space. Try this and we'll do it next time. Okay, define sample space and define 5 different probability functions. Okay, try doing it out. It's not that hard, but you just need to make sure that you know the rules, okay, and you follow them. Okay, so the emphasis is on definition. Okay, you need to find out a way to concisely define it, because यहाँ पे आप s देखेंगे तो s आपके पास बहुत बड़ा होगा. You need to figure out s का size क्या है, but s is big, which means कि इसके जो event space है उसका size तो और भी बहुत बड़ा है. Okay, so how do you actually define a probability function which goes from this space to real space? Okay, so the important part is how do you concisely define it while making sure that your rules for probability function are followed. Okay, so for example यहाँ पे तो हमने कर लिया because there were only 2 outcomes and there were only 4 things in the event space. Okay, so it's easy for each one of them. I set it to something and I know जो rules हैं वो मैं mentally calculate करके उनको कर सकता हूँ, right? But in here if you look carefully, there are a lot more things in the sample space. So evidently there are a lot more things in the event space. Okay, so as such हर event के लिए बैठ के define करना कि उसकी probability क्या होगी would not be possible. Okay, even for computers में भी हम नहीं कर सकेंगे. Okay, so we somehow need to concisely tell the other party what this function is without telling him what this value is for each event. Okay, so think about more natural ways to define a probability function. So definition should remain same, but somehow you need to find out an equivalence जो आसानी से हम describe भी कर सकें और उससे अगर किसी ने किसी event की probability find out करनी है तो वो उसको आसानी से कर भी सके. Okay, don't look it up. Okay, I would suggest, मैं normally आपको कहता हूँ I would suggest against reading the book for now. Okay, just take your time off, enjoy करें और बाकी आपने जो काम करने करें. Don't go and read the book for now, but try thinking about ways to define probability so that it's easy to describe. अभी तक हमने जैसे उसको define किया है, this is going to be the definition. Okay, definition में कुछ हम change नहीं करेंगे, but this is sort of the precise definition which अगर हम उसको literally follow करेंगे तो we are in trouble. Okay, we won't be able to write a lot of probability functions. Okay, so for example इस question के लिए हमने अगर probability function लिखना है तो how would we write it? I'm going to stop here and I'm gonna wait for questions. People are
sort of dead today. I don't know, maybe it's the exam or the weather or I don't know, politics. I don't know what's going on. But I would want your chatty self back on Thursday. Okay, so let's meet on Thursday. सर Yeah. सर मैं ये प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन वो लिखने का एक तरीका के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जब हम इसके सैंपल स्पेस को लिखेंगे, तो हाँ, फॉर एग्जांपल हमने 61 को लिखना है, तो हम उसे मतलब 61 लिखेंगे या उसको उसमें लिखेंगे ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट? so set को लिखने का तरीका, right? So you will use the set notation. So for example, अगर आपके पास ये वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने ये कहा था कि टॉस 2 coins, okay? So इसकी जो आउटकम्स है ना, उसको आप ऐसे लिख देंगे. You would write it H, you would write it T, and this is what it is. Okay, अब मैंने अगर इसकी इवेंट स्पेस लिखनी है तो एज सच मुझे लिखना चाहिए phi I should write H as this. Okay, ऐसे लिखना चाहिए. Okay, this is how you write a set. Okay, this is the true way, but you'll have a look in the book kabhi, to you'll see ke wahan pe just for this probability chapter वो इन braces को भूल जाते हैं. Okay, और इन कॉमों को भी भूल जाते हैं, तो they would just write this thing as phi h t and h t. Okay, so अब यहाँ पे h t को साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इवेंट की बात हो रही है. सॉरी. या सो इस केस में हमने एच और टी को साथ लिखा हुआ है, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ मिस नोटेशन जो हम अलाउ करते हैं इन प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस इज एक्चुअली दिस थिंग, ये वाली जो चीज है. ओके, गुड क्वेश्चन. सर और अगर ट्वाइस में भी यही सैंपल स्पेस होगी? Oh yeah, so ट्वाइस के केस में सैंपल स्पेस ये नहीं होगी, ये वंस के केस में होगी. सो ट्वाइस के केस में जो आपकी सैंपल स्पेस होगी वो होगी एच एच. ओके, क्योंकि सर आपने इस वहाँ पे ट्वाइस का वर्ड लिखा था ना, बाद में आपने हाँ सिंगल की हाँ लिख दी, तो हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. सो इसमें ये एच एच होगी, यहाँ पे एच टी होगी, यहाँ पे टी एच होगी, और यहाँ पे टी टी होगी. ओके, अब यहाँ पे अगेन थोड़ी सी कंफ्यूजन और बढ़ गई है, बिकॉज अब यहाँ पे ये जो पेयर है, इट्स नॉट अ सेट, इट्स सीक्वेंस. ओके, इट्स एक्चुअली अ पेयर जिसको हम पहले ऐसे लिखते आए हैं, एच कामा एच पैरेंथेसिस के अंदर, राइट? सो दिस इज सीक्वेंस इन दैट सेंस. ओके, इसमें ऑर्डर मैटर करता है. ऑलराइट, सो लेकिन इसको हम एच एच लिखते हैं और एच टी और टी एच लिखते हैं. सो रिमेंबर, एच टी और टी एच आर डिफरेंट. अगेन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यू लर्न कि सैम्पल स्पेस में जब आप आउटकम्स को लिखते हैं तो आउटकम्स कैन बी रिटन एज एच एच फॉर एन ऑर्डर्ड पेयर, और जब हम इवेंट्स की बात करते हैं तो इवेंट्स में आपके पास जो चीज़ें हैं वो सेट्स हैं. ओके, तो वहाँ पे अगर आप एच टी लिख रहे हैं तो इट मीन्स इट्स अ सेट एच कामा टी. ओके, और सैम्पल स्पेस में अगर एच टी लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट्स अ पेयर एच कामा टी. Good point. I should have mentioned it myself. All right, guys. I think that should be the end of today. See you on Thursday. Okay.